It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum guys and welcome to my vlog. So guys, how are you? So can you guess what will we do in today's video? By the thumbnail you might have known already, but क्योंकि मेरी शर्ट में बल्ब बना हुआ है तो कुछ बल्ब से ही लेना देना. So guys, what is this? Can you guess it? Oh, for the one who guessed right, we are making circuits. So for the simple circuit, we will need a battery holder, some batteries, two batteries, switch, terminals, bulb. This is the most important one. So now let's make a simple circuit. सो गाइज अब हम लोग ने यहाँ बैटरी होल्डर प्लेस कर चुके हैं. तो क्योंकि हम लोग इसको बड़ा बना रहे हैं अपना थोड़ा सा सर्किट, वी आर मेकिंग इट बिगर. सो हम लोगों को वायर भी चाहिए होंगे एक्सटेंड करने के लिए. सो हम लोग अभी दोनों वायर्स को ज्वाइन कर लेंगे और जैसे आपने देखा हम लोग ने ज्वाइन कर लिया है. फिर हम लोग इसको स्विच में भी ज्वाइन कर लेंगे जैसे हम लोग ने वहाँ वायर्स में करा था. और अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सर्किट टाइप का लुक दे रहा है हमें. और यहाँ हम लोग ने इनको ज्वाइन कर लिया है. यहाँ भी हम लोग इसको राउंड कर देंगे ज्वाइन करके. फिर यहाँ हम लोग ने दूसरा टर्मिनल भी लगा दिया है सर्किट में. और यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैक वायर हम लोग ब्लैक के साथ करेंगे, ब्लैक टर्मिनल. और आप देख सकते हैं हमारा टर्मिनल हम लोग अब टर्मिनल लगा रहे हैं. और ये बहुत इजी है लगाना, इतना मुश्किल नहीं है टर्मिनल लगाना. वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग ने पहले सारी चीज़ें करी थी. तो गाइज नाउ वी हैव डन इट. और हम लोग ने दोनों टाइप के टर्मिनल लगा दिए हैं, दोनों साइड के टर्मिनल लगा दिए हैं. सेम एक्सटेंड करा है हम लोग ने रेड वाले टर्मिनल को भी जैसे हम लोग ने ब्लैक वाले को करा था. सो गाइज नाउ वी विल पुट द बल्ब. तो गाइज हम लोग ने बल्ब ले लिया है. So guys, now we will connect the both terminals on the positive and negative side of the bulb. We will connect it and now oh my god, our circuit is done. So now let's open it. Oops. Oh my god, I'm so dumb. I even forgot to put the batteries. So now let's put the batteries. जल्दी बैटरीज रखो यार, जल्दी. मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ कभी कभार. तो now see the magic guys. Now you can see our circuit is working properly. So guys, finally we have made the simple circuit, a very cute circuit. And as you can see, I have also labeled the bulb, switch, battery and also the current passing through it. So now let's try it. Rayan, you can open it. Yes. Okay, so open the switch. Wow! It's working. It is now. This is a simple circuit. So what have we done in this is it is very simple because it does not contain any kind of loop or any kind of series. So it just contains one loop, not more than one, and not even any series like many bulb, one bulb, two bulb, three bulb. So it is not complex. So that's why it is called the simple circuit. And now you can see that it's working. Very simple circuit. So guys, I hope you get to know how to build or make a simple circuit. I hope you liked the video also. Please like and subscribe my channel Ayan Vlogger. Allah Hafiz.